Hi, good morning everybody. So now my dear students, we will discuss the last concept of our chapter how, when and where. Okay, so now beta we have discussed every main point, every paragraph about the history of India. We have studied about Hindu period a little bit. We have studied about the Muslim period and the some of the main aspects of the British Empire. Like we have studied the viceroys, we have studied the uh, governor generals. We have studied the that our Indian history is divided into three part: ancient, medieval and modern. And then we have read about a book called The History of British India, written by James Mill in 1773. And it discussed the aspects of the three layers in India: Hindu period, the Muslim period, and the British period in India. Again, we have discussed about the records and the administration and rules and regulation process of the British Empire in India, and their policies of governing our country, our land, our own people, and what benefits they have given us, what we took from the Britishers that we are using at present. We have discussed every point. Okay, so now and the writing stuff of the documentation started by the British people, we have discussed is that how much is the documentation in the written form is important to us. Okay, so we know all these aspects now. Now we will read the last paragraph, that what records do not tell. Okay, and so we will try to finish this chapter today, and in the next video we will do the question answers of this chapter. Thank you. Now let's come and start the chapter beta. So now I told you that the Britishers were the first one to start the surveys in India. They started census also. They started surveys in the agriculture, in the village, town, cities, and big constituencies and provinces also. They calculate the population each every after 10 years. They started believing that it is necessary to know all the aspects of life of a land, like socially, political, religious and economic lifestyle of the country, to rule them. And so it became easy to know. After knowing and getting all the information of the land, so it become very easy to rule them. Okay, so now beta we will study what official records do not tell. From this past corpus of records, we can get a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for the posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. So now it is like कि बेटा the records we have of the ancient British time period in India, they are those records which were written down officially. कि बेटा वो officially लिखे गए थे, और वो किसके द्वारा लिखे गए थे? वो वहाँ के लोगों के द्वारा ही लिखे गए थे. ओके एंड मतलब कि फिर अब वो सिर्फ वो रिकॉर्ड्स थे बेटा, वो इंफॉर्मेशन थी, वो नॉलेज थी जो सिर्फ ब्रिटिशर्स चाहते थे कि आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों को सराहे, हमें याद रखें. ओके, बट उनके साथ कुछ तथ्य, कुछ तर्क, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी छूट गए थे बेटा जो रिकॉर्ड्स में नहीं लिखे गए थे. दे वर नॉट रिटन डाउन in the period of ancient times. Okay, my dear students, so now let us take an example, like when the Britishers were appointing their governor generals and viceroys in India, they were only allowed to write about the benefits of the work that the Britishers are doing in India for Indians. कि बेटा सिर्फ जो हमारे पत्रकार थे, जो अखबार, मैगजीन्स, आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, उनको सिर्फ इस बात की आज़ादी थी कि वो सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं होंगी, जो अंग्रेज़ों के साथ में होंगी या उनके पक्ष में होंगी या उनके फेवर में होंगी. आप समझ गए? लाइक दे वॉन्ट टॉलरेट इट दैट एनी ऑफ द पब्लिशर विल पब्लिश समथिंग negative that will present the negative image of the British people among its own people. Okay,
So now let's take a picture. This is a picture of surveying, mapping and survey operation in the progress in Bengal, a draw by James Primpson in 1832. Emphasize the scientific nature of the project. Okay, like to start a scientific project at a land, the Britishers and the other contractors are surveying and calculating the लैंड बाय मैपिंग इट कि बेटा यहाँ पे कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो, और उसके लिए ज़मीन का देखने आए हैं कि भाई ज़मीन कैसी है, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो सकती है और हमें कितनी ज़मीन की ज़रूरत है. ओके, so dear students, this is a picture of revolt of 1857. Now you all know very well that the revolt of 1857 is the first revolt in India against the Britishers for our freedom. Okay, but it was put down by the Britishers because they were large in number, they were having high weapons, and all the strugglers and all the revolters were shut down. Okay, now images need to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. This image can be found in several illustrated books produced by the British after 1857 rebellion. The caption at the bottom says, "Munitions spoils share the loot." In British representation, the rebels appears as greedy, vicious and brutal. You will read about the rebellion in chapter 5. Okay, so we will read about all these in the chapter number 5, the revolt of 1857. Okay, now for that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. सो नाउ बेटा, अब कुछ जो तथ्य ऐसे थे जो लिखे ही नहीं गए थे, जो कभी जानकारी ही नहीं थी किसी चीज़ के बारे में लोगों को, वो कहाँ से एमर्ज हुए? वो एमर्ज हुए विद द राइज ऑफ द प्रिंट कल्चर इन इंडिया. जब बेटा हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, एंड प्रिंटिंग ऑफ व्हाट? प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन्स and books. Okay, what the people started writing their traveling histories, their autobiographies, their views, their thoughts, and their own level of understanding with the other people. So उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी पढ़ने की हैबिट लग गई. वो साथ के साथ क्या करने लगे बेटा? वो साथ के साथ पब्लिक में उन सब डिबेट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स करने लगे, डिस्कशंस होने लगे. सो लाइक सी वी हैव डायरीज ऑफ पीपल. हमारे पास लोगों की वो डायरीज थी कि जहाँ पे लोग अपने अपने विचारों को लिखते थे. अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड ट्रेवलर्स, हमारे पास पिलग्रिम्स और यात्रियों की भी कहानियाँ हैं. ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और उस समय के इतिहास में ऑटोबायोग्राफीज भी हैं हमारे पास. एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन दी लोकल बाज़ार, और कुछ ऐसी बुकलेट्स, शॉर्ट स्टोरीज जो कि वहाँ के लोकल बाज़ारों में उस समय पे बिकती थी. एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे ही प्रिंटिंग मशीन का विस्तार हुआ, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, अखबार छपने लगे, एंड इश्यूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक, और जो लोकल इश्यूज़ होते थे, सोशल इश्यूज़ होते थे, वो बेटा अखबार में अच्छे से डिस्कस होने लगे और उनके ऊपर वार्तालाप भी होने लगी. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, और जो बड़े बड़े महान नेता थे, रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, वो अपने अपने विचारों को उसमें लिखने लगे ताकि उनके विचार एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाएं. बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग उन अखबारों को पढ़ें और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग उनके विचारों का समर्थन करें और एक साथ आएँ. ओके, ना पोइट्स एंड नॉवलिस्ट, जो पत्रकारी से हटके जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कविताएं लिखते थे, नॉवलिस्ट थे जो नॉवल लिखते थे, वो भी अपनी एक्सप्रेस उसमें करने लगे. ओके, एंड ऑल दीज राइटिंग मटेरियल शोज डिस्प्लेज द वर्क ऑफ बेटा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग.
ओके कि क्या सही है और क्या गलत है, ये दर्शाने के लिए उन्होंने इसका साथ लिया। All these sources, however, were produced by those who were literate. अब बेटा ये चीज़ें तो कॉमन है ना कि भाई लिख वही सकता है जिसको पढ़ना और लिखना आता हो। सो लाइक फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीसेंट्स। बट इनके काम से हमें ये तो पता नहीं चलेगा ना कि भाई वो कहाँ पे थे, कि पहले के लोग खेती कैसे करते थे, किसान कैसे थे, और जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी वो कैसे रहती थी, दी वर्कर्स इन दी माइंस, और जो कारखानों में काम करते थे वो लेबर क्लास कैसी थी, और जो गरीब गलियों में घूमते फिरते थे एक जगह से दूसरे जगह तक, वो अपने सर्वाइवल कैसे करते थे। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ ए वेरी मोर डिफिकल्ट टास्क। उनके बारे में अध्ययन करना, किन के बारे में, दी पुअर people who were beggars, the people who work in the mines, the poor people who were tribals and peasants and farmers. It is really difficult to know about them because it is not exactly written how they survived in the earlier times. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book you will see how this can be done. और ये पॉसिबल हो सकता है और इसको हम आगे जानेंगे जब हम इन चैप्टर्स के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ I shall show you a cutting of newspaper and we will read it. Not fit for human consumption. Okay, this is the tagline of a headline from the Hindustan Times newspaper published in 1946. Okay, so newspaper provide accounts of the movements in different parts of the country. Here is a report of police strike in 1946. एक पुलिस स्ट्राइक की रिपोर्ट है बेटा ये। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchens. 2,000 पुलिस अधिकारियों ने खाना खाने से और अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया था और उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि जो खाना उन्हें मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। As the news spread of the police stations, the men there were refused to take food. और जैसे कि ये खबर छपी तो वैसे ही सभी लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। One of the strikers said, the food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for human consumption. और जो खाना हमें पुलिस लाइन की रसोई घर से पहुंचाया जाता है वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। It is not for good for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. और यहाँ तक कि जो हमारे पशु हैं वो भी खाना नहीं खाएंगे जो चपातीज और दाल हमें दी जाती है। और ये कब की है बेटा? 22 मार्च 1946, हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, so now my dear students, the chapter is being completed now and in the next video we will do the question answers. I hope the chapter is clear to you and you are very much familiar with it now. Thank you.